Hello everyone, welcome to the channel. So again I have brought a Ignyte Ign4 और इस बार हम इस पे Marquez 7TC1 पेंट करने वाले हैं. So the first step is to paint the white base coat. So after the white base coat मैंने decals place कर लिया है अपनी जगह पर. Now we'll start the painting process by painting the Shoei first. After the Shoei हम Red Bull और Bull को red paint करेंगे. So logos पेंट हो चुका है. Now we'll cover the logo और further paint process start करेंगे. Firstly हम red spray कर रहे हैं जहाँ पर red ant आने वाली है. तो top and the back area would be red. So after painting red हम उसे completely dry होने देंगे and we'll prepare the surface for the dark blue. तो बैक साइड ऑफ द हेलमेट मैंने 93 मास्क कर लिया है और टॉप पर ऐसा पोर्शन सिर्फ ब्लू आने वाला है, तो उसके अलावा मैंने सब मास्किंग कर लिया है. नाउ विल पेंट लाइट ब्लू ओवर द हेलमेट. ये कुछ जियोमेट्रिकल रैंडम पैचेस है जो कि लाइट ब्लू पर प्लेस करके हम उसके ऊपर डार्क ब्लू पेंट करेंगे टू गेट लाइट ब्लू पैचेस ऑन द डार्क ब्लू. Now we'll remove the patches to minimize the differentiation of two shades. हम उस पे एक dark blue tint spray करेंगे. So मैं ये dark blue tint spray कर रहा हूँ to minimize the differentiation of two shades. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द ब्लू मैंने एंड ड्रॉ करके कट कर लिया है. ये रेड आने वाली है तो उसके अलावा मैंने सब मास्क कर लिया है. नाउ विल पेंट द डार्क रेड हियर. सो आफ्टर पेंटिंग द एंड हमें एंड के आउटर को एक शेडो इफेक्ट देना है. तो अगेन हम एंड को मास्क करके शेडो इफेक्ट देंगे ब्लैक से. And here comes the most satisfying step of the process. आई होप यू आर enjoying द वीडियो टिल नाउ. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना.
द फाइनल स्टेप इज़ टू पेंट पुल एंड बियर, और आफ्टर द पुल एंड बियर मैंने क्लियर कोट बाहर पेंटर से स्प्रे करवाया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गिव इट अ लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको भी ऐसा कस्टम हेलमेट चाहिए या बनवाना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मेरा नाम है शांतनु। मिलते हैं और एक प्रोजेक्ट के साथ।